Now, Finance Minister Arun Jaitley has said that in the order to get GST passed, there is a need that India's parliamentary democracy should function. Addressing a function in Delhi, Finance Minister Arun Jaitley said that the government is hopeful that the GST will be implemented in the coming year. However, he said that if the opposition continues to disrupt the proceedings, then the government will have to find alternative ways to proceed with the bills aimed at boosting the economy. It slowed down when I was in power, therefore it must slow down when somebody else was in power. If that is the intention, then I am afraid we will have to find alternative methods of how to proceed with this matter. But if you go a step further, in order to get the GST, we must get India's parliamentary democracy to function. And the Rajya Sabha continued to be disrupted by continued din by the opposition members for the 7th day in a row. Question hour was again adjourned today due to continuous disruptions by the Congress members. Earlier speaking on the increased excise duty on petroleum products, Arun Jaitley said that the major portion of the increased revenues go to the states and also most of the added revenue goes to the infrastructure development. फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये जो एक्साइज सेंटर लगा रहा है 42% राज्यों को जा रहा है। इसके ओवर एंड अबव हर राज्य ने वैट लगाया। मैं इससे शिकायत नहीं कर रहा क्योंकि राज्य सरकारों को भी वो पैसा विकास काम के लिए चाहिए। तो अगर एक हिस्सा इसका कंज्यूमर पे जाता है, दूसरा हिस्सा इसका डेवलपमेंटल एक्टिविटी में जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है। जो केंद्र ने एक्साइज लगाया 42% राज्यों को गया, राज्यों ने अलग से वैट लगाया, और जो हमने लगाया वो सारा का सारा पैसा हम नेशनल हाईवे और रूरल रोड ग्रामीण सड़क योजना के अंदर जा रहा है। और इस वर्ष के बजट के संबंध में मैं बतला दूं कि ये पहली बार होगा कि हम फिस्कल डेफिसिट अचीव करेंगे बिना फिस्कल कट्स के, बिना कट्स के।